Hello dear students, welcome back to my channel Educational Corner. Today we are going to start with a poem that is A Funny Man from our English NCERT book Poorvi of Standard 7. This poem, A Funny Man, is written by Natali June. As the name suggests, a funny man. So a man who makes us laugh. This poem is about a funny man who makes us laugh. So this poem will tell us about a funny side of our life. So basically this is a humorous poem which will uh, help us to enhance the importance of happiness in our life. So let us start reading this poem and understanding it. A funny man. Let us do these activities before we read. So before reading the poem, we are going to read about this activity and what does this activity tells us to do. Look around you for things or people that make you laugh. So you have to see for the things or people that makes you laugh or anything which is funny. Write them in the bubbles given below. So here some bubbles are given to you. You have to write this in the bubbles given to you. Share the reasons for your answer with your classmates and teacher. So things I find funny, like you can see this man, this is a joker which is making the children laugh over here. So when you see a joker, you laugh. And there are many other things which makes us laugh. So we have to write about those things. First, cartoon characters like Motu Patlu. You can write any other also like Tom and Jerry. So when we see cartoon characters, they makes us laugh. My little sister dancing. When your little sister or your little brother, they dance. At that time, they dance and their moves, their steps makes you laugh. Then when my little brother makes funny faces. So when your little brother or little sister makes funny faces, at that time you laugh. Playtime with friends, when you play with your friends, okay, at that time you laugh. Baby dancing videos, when we come across some videos which are of little babies, at that time we laugh. Then jokes of my friend, when my friends they crack different jokes, at that time also I laugh or they are funny. Okay, so all these activities I have written over here. You can write any other also, and I have shared the reason also. Okay, now let us read the poem. Let us read. One day a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. So what happened one day? A funny kind of man. Funny क्या होता है? Funny का meaning. Let us see some meanings over here. See, funny which makes you laugh or smile. So one day a funny kind of man, मतलब एक दिन क्या हुआ, एक funny यानी कि ऐसा ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको हंसी आ जाए. ठीक है, उसका फेस ऐसा था या उसका लुक ऐसा था जिसको देख के आपको हंसी आ जाए. कई बार होता है कई बार ऐसा एक इंसान आपके सामने आता है जिसे देखकर आप हंस पड़ते हो. व्हेन वी टॉक अबाउट अ जोकर, ठीक है, यू गो टू अ सर्कस, एट दैट टाइम यू सी अ जोकर. तो जोकर जब आपके सामने आता है तो आपको हंसी आती है उसका फेस देख के, उसका लुक देख के, ये आपको हंसी आनी शुरू हो जाती है. सेम वे फनी का मीनिंग है यहाँ पे विच मेक्स यू लाफ और स्माइल. तो एक दिन क्या हुआ, पोएट क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन एक फनी काइंड ऑफ मैन जो है वो एक ऐसा मैन जिसको देख के मुझे हंसी आई, ऐसा एक मैन मुझे नज़र आया. कहाँ पर? केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. और वो कहाँ आ रहा था? वॉकिंग डाउन मीन्स टू वॉक समवेयर, मतलब चलता फिरता कोई एकदम से गली में कोई मुझे एक बहुत ही अजीब सा एक फनी काइंड ऑफ मैन नजर आया. ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड.
आपको पता है शूज़ हम कहाँ पहनते हैं, फीट पे, है ना? बट उसने फीट पे नहीं पहने हुए थे, उसने शूज़ कहाँ पहने थे, अपने सर पे। यू कैन सी द पिक्चर। यस। तो उसने अपने सर पे क्या पहना हुआ था, शू पहना हुआ था। एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, और उसने हैट जो है वो अपनी फीट पे पहनी हुई थी। ठीक है, फीट, पैरों पे, हैट मतलब टोपी पहनी हुई थी, और अपने सर पर शू पहना हुआ था। तो ऐसा एक पर्सन अगर आपको नजर आए, ठीक है, अजीब सा लगेगा बहुत, है ना? और वो अजीब सा लगेगा, वो आपको आपको देख के उसे हंसी भी आएगी कि एक ऐसा फनी मैन आपको नजर आया अचानक से चलते चलते गली में, और उसने क्या किया हो, सर पे जो है शू रखा हो और हैट जो है वो फीट में पहन रखी हो, तो ऐसे इंसान को देख के आपको हंसी आएगी। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने क्या किया, शू को रेस किया ऊपर की तरफ और फिर वो हंसने लगा। हिज मैनर्स वर पोलाइट, पोलाइट मतलब हैविंग गुड मैनर्स एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है, जब हम किसी की तरफ अच्छे मैनर्स दिखाते हैं उसे हम पोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो मैनर्स थे वो बहुत पोलाइट थे, अच्छे थे। ठीक है, वो रिस्पेक्ट शो कर रहा था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। तो पोएटिस क्या कहती है कि मैंने ऐसा कभी पहले, ऐसा फनी साउंडिंग साइट, साउंडिंग मतलब जिससे आवाज़ आए, ऐसी अजीब सी साउंड जो वो निकाल रहा था, तो ऐसी कभी आवाज़ जो है मैंने कभी नहीं पहले सुनी थी। जो आवाज़ थी वो भी बहुत फनी थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि वन डे आई सॉ अ फनी मैन हु केम डाउन द स्ट्रीट, he was wearing shoe on his head and hats on his feet. The funny man raised his shoes and smiled, but his manners were polite. ठीक है, कि एक दिन एक फनी मैन जो है उसको देखा गया कहाँ पर, स्ट्रीट में। उसने क्या वियर किया था, शू अपने हेड पे पहना हुआ था और हैट जो है अपनी फीट पे पहनी हुई थी। ठीक है, उसने अपना शू रेस किया, स्माइल किया, और उसके मैनर्स जो थे वो बहुत पोलाइट थे। ठीक है, जिस तरह की आवाज़ वो निकाल रहा था वो बहुत ही फनी थी और ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी गई। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैरा। He said, "Allow me to present your highness with a rose," and taking out a currant bun, he held it to my nose. ठीक है, तो let's see the word meaning. Highness, member of a royal family. He said, "Allow me," मतलब मुझे allow करो क्या, to present, कि मैं तुम्हारी हाइनेस जो है, ठीक है, जो एक रॉयल फैमिली की होती है ना, जैसे क्वीन हो गई, किंग हो गया, ठीक है, तो उसको मैं रोज दे सकूं। ठीक है, और इतना बोलते ही उसने क्या किया, एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज, उसने एक करंट बन निकाल लिया। करंट बन क्या होता है, अब स्वीट बन, एक मीठा बन जिसके अंदर ना रेसिन्स या किशमिश होती है। ठीक है, जिसके अंदर किशमिश होती है उसे हम बोलते हैं करंट बन। तो वो चाहता था कि वो एक रोज निकाल के उसने किसको किसको देना चाहता था, हाइनेस को देना चाहता था, जो क्वीन है वहां की उसको देना चाहता था। और इतना बोलते बोलते ही उसने एक करंट बन निकाल लिया, एक ऐसा बन निकाला जिसके अंदर किशमिश थी, और उसने वो मेरे नोज के पास रख दिया। हेल्ड इट टू माई नोज, यानी कि मेरे नोज के पास उसने उसको रख दिया। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, स्टैगर्ड मतलब वॉक अनस्टेडीली एज इफ अबाउट टू फॉल, मतलब कि आप जैसे टेढ़े मेढ़े लड़खड़ाते हुए जैसे चलते हो ना कई बारी। ठीक है, गेम खेलते हैं हम तो क्या करते हैं, हम कई बार ऐसे शो करते हैं हम लड़खड़ा रहे हैं, तो लड़खड़ाते हुए चलना, तो एकदम से लड़खड़ाते हुए चलना अगेंस्ट द वॉल। एंड देन आई आंसर, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विथ सच अ फनी लुकिंग स्मेल। ठीक है, तो वो जो करंट बन था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने निकाला तो रोज था, पर वो लग रहा था करंट बन निकाला। करंट बन जो जिसको वो स्मेल कर रहा था, तो वो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा रोज है जो पहले कभी हमने स्मेल नहीं कर रखा। ठीक है, तो उसने जो रोज दिया, ठीक है, उस रोज में ऐसी स्मेल थी, अजीब फनी स्मेल थी जो पहले कभी स्मेल नहीं की गई थी। ठीक है, और उसने एक करंट बन निकाला जो रेसिन्स, किशमिश का एक बन होता है, स्वीट बन होता है, केक टाइप होता है, उसको निकाला और उसने मेरे नोज के पास उसको रख दिया। ठीक है, तो आई स्टैगर्ड बैक मतलब हो गया कि मैं लड़खड़ाता हुआ अब वापस वॉल के पास चला गया, और फिर मैंने देन आई आंसर्ड, वेल मैंने कभी ऐसा रोज नहीं स्मेल किया जो इसकी इतनी फनी लुकिंग स्मेल है। ठीक है, so the meaning is he, the funny man, said he wanted to present a rose to the highness, a member of a royal family. ठीक है, तो फनी मैन ने क्या बोला कि वो एक रोज जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है या देना चाहता है, किसको, एक रॉयल फैमिली की मेंबर को। एंड ही टुक आउट अ करंट बन फ्रॉम हिज नोज, और वो एक
उसने करंट बन जो है एक किशमिश का स्वीट बन जो है उसने अपनी नोज से निकाला. आई वॉज सरप्राइज टू स्मेल द फनी लुकिंग नोज विच आई नेवर सॉ बिफोर. ठीक है, ऐसा रोज कभी देखा नहीं, और ऐसी जो स्मेल थी वो इतनी अजीब फनी स्मेल थी, वो भी कभी ऐसी स्मेल जो है वो उसने कभी स्मेल नहीं करी थी. Okay? He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. So he then began to sing a song. उसने अचानक से क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया. And sat down on the ground. और वो कहाँ बैठ गया, ग्राउंड पर बैठ गया. तो ग्राउंड पर बैठ के उसने गाना गाना शुरू कर दिया. You never heard in all your life. आपने अपनी लाइफ में पहले कभी भी सच अ फनी फीलिंग सॉन्ग, कभी ऐसा गाना नहीं सुना होगा, इतना फनी था. माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट. जैसे पूछा कि तुम जो है अपनी फीट पे टू हैट्स जो है वो क्यों पहनते हो. ठीक है, अपनी फीट पे टू हैट्स क्यों पहनी हुई है यहाँ पे तुमने. आई सेड. ही टर्न्ड द अदर वे अबाउट. उसने एकदम से क्या किया, टर्न कर लिया. एंड हॉप्ड होम ऑन ऑन हिज हेड. और वो हॉप करके एक जगह से दूसरी जगह हॉप करते करते अपने घर वापस चला गया. और हॉप भी कैसे कर रहा था, उल्टा होकर अपने सिर के बल. ठीक है, सो दिस इज अ फनी पोम बाय नताली जॉन्स. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज पैराग्राफ सेज. The funny man started singing a funny song which was never heard before and he sat down on the ground. ठीक है, वो ग्राउंड पे बैठ के उसने क्या किया, फनी मैन ने एक फनी सॉन्ग जो है वो गाना शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं सुना गया था. Then I asked that why you wear two hats on your feet. फिर उनसे उससे क्या पूछा गया कि तुम ये दो हैट्स क्यों पहनते हो अपनी फीट पे. Without answering my question, he turned and hopped back on his head. So क्वेश्चन का आंसर किए बिना ही उसने टर्न किया और अपने सर के बल हॉप करते करते वो अपने घर वापस चला गया. ठीक है, so I hope you have understood the poem that one day there was a funny man who was seen in the street and he was wearing shoe on his head and hats on his feet. So his manners were polite and he wanted to present a rose to Highness, who is a member of a royal family. And then he took out a currant bun from his nose, and the funny looking rose uh, was seen, which was never seen before. And the funny man started singing a funny song, and he also sat on the ground. And uh, then he it was asked that why are you wearing two hats on your feet. So without even answering to the question, he came back, or he ran back or hopped back home on his head. So I hope you have understood this poem. This is a humorous poem written by Natali John. Now let us understand the summary of this poem. Summary. So the summary of the poem. The poem, A Funny Man, written by Natali Joan, describes about a silly man, or you can say a funny man, who does everything in opposite and funny way. Okay, so what he did, he was wearing shoe on his head, then a hat on his feet. Okay, then he was offering a currant bun as a rose. He was singing a peculiar song, that is a strange song, and he was hopping home on his head. Okay, so all things were done in funny and silly way. Okay, so the man was silly, and because
Here the man wears a shoe on his head because he was wearing shoe on his head, then hat on his feet, then he was offering a currant bun which was full of raisins as a rose, and he wants to give that to the highness. Then he was singing a peculiar song, means a strange song, and even he was hopping home on his head, all while maintaining polite manners. So he was very polite in his manner. So the poem is written in humorous tone. Okay, humorous tone to make the reader laugh at the funny man's silly action. So whatever action the funny man was doing, the poem is written in a humorous tone, in a funny tone, so that the reader, whosoever is reading the poem, will laugh at the actions which are done by the funny man. Moreover, the language is simple to create the playful mood. So the language here is very simple. You can easily understand the language written by the poetess, and it is very simple. Why? Because to create the playful mood. So the message which this poem gives us is uh, that we should enjoy the funny side of our life, right? And we should it also enhances the value or importance of happiness in our life. Okay, so I hope you have understood this poem. Now see you soon in my next video with the question answers and back exercise of this poem. If you are liking my video, please do subscribe my channel and share your valuable comments with me. Now I'll see you soon. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.